management system, and its hierarchical model follow. Simple structure, parent-child organization, performance. These are the very well managed simple structure. The organization of an IMS, IMS मतलब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में IMS रहता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत रहता है, तो उसको प्रॉपरली मैनेज करना. The organization of an IMS database was easy to understand. तो इसमें सिंपल है, हायरार्चिकल मॉडल में सिंपल है मैनेज करना. The database hierarchy is paralleled that of a company organization chart or family tree. तो एक फैमिली ट्री के जैसा टॉप टू बॉटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हो रहा है. So that will be do in the this hierarchical model. Parent-child organization. An IMS database was excellent for representing parent-child relationship. तो इसमें IMS जो है was excellent for representing the parent-child relationship, such as A is a part of B or A is a part on by B. तो यहाँ पे हायरार्की में इजीली लिंकिंग होता है, पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी होता है और इजीली लिंक कर सकते हैं इस हायरार्चिकल performance. IMS stored parent-child relationship as a physical pointers from one data record to another, so that movement to the database was rapid. तो इसी के कारण क्या होता है कि पॉइंटर भी रहता है और इसी के कारण रिकॉर्ड जो होता है रैपिडली मूवमेंट कर सकते हैं. बिकॉज द स्ट्रक्चर वाज सिंपल, IMS could place parent-child record close to one another on the disk, minimizing disk input output. So this is the second type of data model is a hierarchical. First हमने देखा file system data model, second hierarchical data model. Then afterward they will be the develop the next, that is a network data model. The simple structure of hierarchical database become a disadvantage. तो hierarchy में भी कुछ limitation आ गई, disadvantage है. When the data had to more complex in order processing database. तो यहाँ पे complex structure से order processing database is very complex. For example, single order might participate in a three different parent-child relationship, linking the order to the customer who placed it. Example बताया उन्होंने कि किस तरह से ये complex हो सकता है. The salespersons who took it and the product order as shown in the figure 3. The structure of this type of data simply did not fit the strict hierarchy of MIS. देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सॉरी, मल्टीपल चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो यहाँ पे ये ड्रॉबैक आ जाता है यहाँ पे. तो इसलिए फिर उन्होंने और एक नया मॉडल बनाया, द डील विद द रिलेशनशिप एप्लीकेशन सच एज ऑर्डर प्रोसेसिंग. A new network data model was developed. तो यहाँ पे नेटवर्क डेटा मॉडल डेवलप किया गया. The network data model, the hierarchical model by the network data model extend the hierarchical model by allowing a record to participate in a multiple parent-child relationship. तो नेटवर्क की वजह से क्या किया, वो record will be allowing to the participate in a multiple parent-child relationship. फिगर 4 में देखो, यहाँ पे देखो, इस तरह से नेटवर्क का यूज करके order processing would be done. So drawback of hierarchical, that will be overcome with the help of network data model. This relationship were known as a set of in the network model in 1971.
The conference on the data system language published on the official standard for network databases, which become known as CODASYL model, code SIL model. IBM never developed in the date network DBMS of its own. तो IBM ने DBMS में develop never develop here, choosing instead to extend the IMS over the years. But during 1917, independent software companies rushed to embrace the network model, creating the products such as Quilnet, ID, IDMS, Syncoms Total, and Advance Advanced DBMS that become a very popular. तो उस टाइम ये बहुत पॉपुलर हुए और इस तरह से ये नेटवर्क मॉडल का जनरेशन वहाँ पे वर्कआउट हुआ और मैक्सिमम पीपल्स आर यूज दिस concept. But again, will be the for a programmer accessing a network database was very similar to accessing a hierarchical database. फिर इसमें प्रोग्रामर इजीली नेटवर्क सिस्टम का यूज करके एक्सेसिंग कर सकते हैं. An application program could do the following: find the specific parent record by a key, such as customer number, move down the first child in a particular set, first order placed by this customer, move sideways from one child to the next in the set, the next order placed by the same customer, move up from child to its parent in another set, the salesperson who took the order. Once again, the programmer had to navigate the database record by record, this time specifying which relationship to navigate well as the direction. तो navigate किया गया इसमें भी record accessing किया गया with the help of networking. So network database had several advantage. तो flexibility था, standardization है, performance is also very well. Network database had their disadvantage to like a hierarchical database. फिर इसमें भी कुछ disadvantage आ गए. They were very rigid. The set relationship and the structure of the record had to be specified in advance. Changing the database structure typically required rebuilding the entire database. तो अगर structure change करना होगा तो rebuild करना पड़ता होगा. So that's why that is also this model will be. Then nowadays also will be they use the some different database are there. नेटवर्क के बाद फिर क्लाउड बेस आया, अभी जो चल रहा है. Latest trend is a cloud base, AI base database will be there. So so many applications are flexibly you have to so many application database are flexibly managed with the help of that system. Okay. So next is what? Data abstraction. So basically data abstraction is one of the concept. There are three levels are there. View level, physical, logical level are there. So these are the diagram. View level देख रहे हैं आप, logical level and physical level. The physical is a bottom level. How the database will be created, where it will be stored. Logical level is a understanding about the data creations and think it to create data and store in the various places. So these are the physical level is the lowest level of abstraction. So first data abstraction क्या होता है?
तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज जो यूजर सिस्टम को यूज करते हैं अलग अलग, they are just see they will be the interact only a interface. They are not understanding what about the various complexity in your application. So the developer will be hide the complexity from users through the several level of abstraction. तो ये अलग अलग लेवल से एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी को. So how to design to use complex data structure to represent data in the database. So user not will be understanding about that. So there that will be the hide for the users. To simplify the user's interaction with the system. तो यूजर को खाली इंटरैक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए ये अलग अलग लेवल को ऐड किया जाता है. So user can be just few levels are there and they will be very well easily interaction the system. The physical level ये lowest level में आता है. Abstraction describe how the data are actually stored. तो डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है एक्चुअली, ये फिजिकल में पता चलता है. Physical level describe the complex low-level data structure in detail. ये complex low-level data structure है. Logical level is the next higher level of abstraction. Describe what data are stored in the database and what relationship exists among those data. तो relationship क्या है, कौन सा data store हो रहा है. The logical level thus describe the entire database in terms of small number of relatively simple structure. Although implementation of the simple structure at the logical level may involve complex physical level structure, database administrators who must decide what information to keep in the database use the logical level of abstraction. So, which information they will be decided to give permission to the other users. They will be also in a logical level. And view is a top with the highest level of abstraction describe only a part of the entire database. Even though the logical level uses simpler structure, complexity remain become of the variety of information stored in a large database system. Many users of the database system do not need all this information. Instead, they need to access only a part of the database. The view level of abstraction exists simply their interaction with the system. The system may be provided many views for the database here. Okay. So this is a diagrammatically representation of level of abstraction. An analog of the to the concept of data types in a programming language may clarify the distinction among the level of abstraction. Most higher level programming language support the notation of record type. Pascal language we may declare a record as follow. तो पास्कल में किस तरह से रिकॉर्ड को डिक्लेयर किया जाता है. टाइप कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर आईडी स्ट्रिंग, कस्टमर नेम स्ट्रिंग, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी एंड जिस तरह से पास्कल लैंग्वेज था पहले, तो उसमें ये डेटाबेस डिजाइन किया गया. दिस कोड डिफाइन द न्यू रिकॉर्ड टाइप कॉल्ड कस्टमर. तो यहाँ पे कस्टमर नाम का एक रिकॉर्ड या टेबल हो सकते हैं with 4 field: customer ID, name, street and city. Each field has a name and type associated with it. A banking enterprise may have several such as record type. तो बैंकिंग देख रहे हैं कि आज के जमाने में रिकॉर्ड बेस्ड सिस्टम है, उसके अंदर पूरे रिकॉर्ड ही रहते हैं. हर एक कभी कोई भी सॉफ्टवेयर देखो उसमें रिकॉर्ड ही रहती है, और ये रिकॉर्ड को मैनेज करना और टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एनी ऑर्गेनाइजेशन.
Banking enterprise may have several such a record type, including accounts. तो बैंकिंग सिस्टम में कितने सारे रिकॉर्ड रहते हैं. Account with field account number and balance. Employee with field employee name and salary. At the physical level, a customer account or employee record can be described as a block of consecutive storage location. For example, word or bytes. The language compiler hides this level of detail from programmers. Similarly, the database system hides many of the lowest level storage detail from database programmers. Database administrators, on the other hand, may be aware of certain detail of the physical organization of the data. At the logical level, each such a record is described by a type definition, such as previous code segment and interrelationship of this record type is defined as a well programmer using programming language work at this level of abstraction. The programmer will be the use this logical level to implement the application. Similarly, database administrator usually work at this level of abstraction. Finally, view level of computers, users see a set of application program that hide the details of the data types. Similarly, at the view level, several views of the database are defined and database users see this. In addition to hiding the detail of the logical level of the database, the view also provide security mechanism to prevent users from accessing certain part of the database. For example, teller in a bank see only that part of the database that has the information on a customer account. They cannot access any information about salary of employee. तो बैंकिंग सिस्टम में अभी हमारे इतने सारे अकाउंट है. So maximum people are open the account in SBI, HDFC. तो हम खुद का अकाउंट देख पा रहे हैं, but you cannot be see the any other customer account because of security will be there. Some few levels parts are a hide from the different user permissions जो भी है इस लेवल में होता है, लॉजिकल में सेट किया जाता है. तो इसी तरह हमें कस्टमर जो है हमारे पर्सनल अकाउंट हम देख पा रहे हैं. यू कैनॉट बी सी द एनी अदर अकाउंट, एनी person account for there. So that's why it's a very well to design that things in the different level of abstractions. So next thing is about the entity sets. तो entity मतलब क्या is a thing or object in the real world that is distinguishable from all other objects. For example, each person's in an enterprise in an entity. Entity has a set of property and value for some of set of property may uniquely identity an entity. For instance, a person may have a person ID property whose value uniquely identify that person. तो जैसा कि पर्सन जो रहता है, पर्सन भी एक ऑब्जेक्ट, उसकी एक आईडी, पर्सन आईडी, दिस इज अ प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी से उसको क्या आइडेंटिफाई किया जाता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी रहती है, उससे हम उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. तो द वैल्यू 677 डबल एट 899011 फॉर पर्सन आईडी will uniquely identify one particular person in the enterprise. तो enterprise it's a big organization, big corporate sector. तो वहाँ पे जो एम्प्लॉई जो पर्सन है उसका आईडी सेट किया जाता है. तो उससे पता चलता है कि ये कौन सा पर्सन है, किस उसका नाम क्या है, डिटेल्स क्या है,
ये आईडी से आपको तुरंत पता चल जाता है। Similarly, loan can be thought of as entitles, entities, entities, and loan number is L15, L for loan. At Perry writes French uniquely identifies a loan entity. तो इससे लोन आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस पर्सन का लोन है, क्या है। एंड एंटिटी में भी concrete such as a person or a book, or it may be a abstract such as a loan or holiday or a concept. Specialization. Customer and entity set person with attribute name, street and city. A person may be further classified as one of the following. यहाँ पे classified किया है customer and employee. This is called as a ER diagram. ER diagram is nothing but the entity relationship diagram. तो यहाँ पे employee work on branch, work on managers. तो ये डायग्राम प्रेजेंट क्या करता है कि रिलेशनशिप क्या है। जो भी कोई भी एम्प्लॉय आता है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है अलग अलग ब्रांच पे, जॉब उसका है। मैनेजेस करना, मैनेजर्स को मैनेजर्स मैनेज करता है अलग अलग जो भी जॉब आती है उनकी। सो दैट विल बी वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ई आर डायग्राम। तो जब आप कोई भी डेटाबेस बनाते हो तो ई आर डायग्राम प्रेजेंट किया जाता है। उससे इजीली अंडरस्टैंडिंग होता है कि डेटा क्या है, किस तरह से रिलेशनशिप्स वगैरह यहाँ पे मेंटेन किया गया है। Each of this person type is described by a set of attribute that include all the attribute of entity sets. अभी एट्रीब्यूट मतलब जैसे कि फील्ड्स, रिकॉर्ड फील्ड जो रहते हैं कॉलम नेम टेबल की। एंटिटी मतलब टेबल, एट्रीब्यूट मतलब फील्ड। सेट पर्सन plus possibly additional attribute. For example, customer entities may be described further by the attribute customer ID, whereas employee entities may be described further by the attribute employee ID and salary. The process of designing subgrouping within an entity set is called specialization. The specialization of person allows us to distinguish among person according to whether they are employee or customer. तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आया। पर्सन अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश अमंग द पर्सन अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर एम्प्लॉय और कस्टमर। तो ये एम्प्लॉय या कस्टमर है। तो एम्प्लॉय इज डिफरेंट, एम्प्लॉय इज वर्क, जॉब करने वाला। कस्टमर मतलब जो तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को लेता है या से परचेस करता है। सो दिस इज अ डायग्राम आल्सो दिस understanding here very well. An ER diagram can be expressed the overall logical structure of database graphically. तो ER मतलब क्या होता है, ये एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहता है। are a simple and clear qualities that may well account in a large part for the widespread use of the ER model. Such a diagram consists of the following major component. तो इसमें रेक्टेंगल रहता है, उसमें एंटिटी सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, उस व्हिच रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। एलिप्स जो रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट से। डायमंड मतलब रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप सेट। लाइंस लिंक द एट्रीब्यूट एंड एंटिटी सेट। डबल इलिप्स जो रहता है व्हिच रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। डैशेड इलिप्स मतलब व्हिच डिनोट द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। और डबल लाइन मतलब which indicate total participation of an entity in a relationship set. Double rectangles which represent a weak entity set.
तो ये कंपोनेंट ये कंसिस्ट किए जाते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं। अभी लेट्स सी द एग्जांपल हियर विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग। कंसीडर द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इन अ फिगर 2 यहाँ पे नीचे दिया है व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू एंटिटी। अभी जो एंटिटी रहता है वो रेक्टेंगल में प्रेजेंट किया जाता है। तो रेक्टेंगल कितने यहाँ पे दो है, एक कस्टमर है और एक लोन है। सब सुन रहे हैं ना, सबको डायग्राम दिख रहा है? हेलो। ओके। तो अभी इस डायग्राम में हमें एंटिटी को पहले पहचानना है। तो एंटिटी विल बी प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल किसको किसको है, कस्टमर को है और लोन को है, राइट। उसके बाद कस्टमर के ऊपर एक एक दो तीन चार लाइन देके इलिप्स ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं इलिप्स। तो इलिप्स में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इलिप्स विच रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या, फील्ड नेम। कस्टमर एंड लोन इज अ टेबल, या उसको थ्योरी ये जो डेटाबेस कंसेप्ट में उसको बोलते हैं एंटिटीज। और जब हम प्रैक्टिकल डेटाबेस का करेंगे तो उसमें इसको बोलते हैं टेबल। और ये जो ऊपर जो अलग अलग जो इलिप्स ड्रॉ किए गए उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और प्रैक्टिकल में उसको बोलते हैं, या हम डेटाबेस में यूज करेंगे उसको बोलते हैं फील्ड नेम या कॉलम नेम। ओके। तो कस्टमर के अलग अलग कॉलम नेम में या फील्ड नेम में एट्रीब्यूट्स है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड सिटी। उसी तरह लोन के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, लोन नंबर एंड अमाउंट। और यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, बोरोवर क्या करता है, लोन लोन को लेता है। इसलिए ये रिलेशनशिप आया। दिस इज अ डायग्राम फॉर ईआर डायग्राम corresponding to customer and loans. Constraints. An ER enterprise schema may define the certain constraint to which the content of a database must conform. In this section, we examine mapping the cardinalities and participation constraint, which are two of the most important types of constraint. Mapping cardinalities and participation constraint. तो ये कंस्ट्रेंट्स है। Constraint means to which the contents of database must conform. Mapping cardinalities means what? Mapping cardinalities express the number of entities to which another entities can be associated via a relationship set. Mapping cardinalities are the most useful in describing binary relationship set, although they can be contribute to the description of a relationship set that involve more than two entity set. For binary relationship set R between entity set A and B, the mapping cardinality must be done, must be one of the following. मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या क्या है, वन टू वन, वन टू मेनी, many to one. One to one मतलब entity A is associated with the most one entity in a B, and entity B is associated at most one entity in a A. See the figure A, देखो यहाँ पे A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4. So this is A and B. They are associated to each other. This is called as a one-to-one relationship. अभी one to many मतलब क्या? An entity in A is associated with many any numbers, zero or more, of entity in a B. And entity B
however, can associated with at most one entity in A. 1 to many, it is called as a one डायग्राम भी में 1 to many दिख रहा है आपको देखो ये 1 1 है तो यहाँ पे ये 1 ए जो है A1 जो है वो B1 को भी एसोसिएट है और B2 भी एसोसिएट है B1 B2 is associated A1 so A can be a 0 to more but B at least 1 can be associated to the A. So this is called as the one to many anti relationship. Many to one. An entity is associated with most one entity in a B. An entity in a B, however, can associated with any number 0 or more of entity B. See the diagram for देखो B एटलीस्ट जो है B का एक को एसोसिएट होना चाहिए या ज्यादा भी एसोसिएट 0 or more but A1 should be the associated in a 1B. Many to one और many to many मतलब क्या both are associated 1 0 or more times. तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है. They will be asked in a theory paper these types of relationship. It is called as a mapping cardinalities बोलते हैं इसको. The appropriate mapping cardinality for a particular relationship set obviously depend on the real world situation. तो रियल वर्ल्ड के हिसाब से ये डिपेंड रहता है. That the relationship set is a modeling. Consider the borrower relationship set. If in a particular bank, a loan can belong to only one customer, and customer can have several loans. In a particular bank, कोई भी एक बैंक देखो, a loan can belong to only one customer. Customer can have a several loan. Then the relationship set from customer to loan is one to many. एक कस्टमर के बहुत सारे लोन हो सकते हैं तो इसलिए one to many. If a loan can be belong to several customer as car loan taken jointly by several businesses partners, the relationship set is many to many. Participation constraint. तो ये हुआ पार्ट इसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनलिटीज और नेक्स्ट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट. The participation of an entity set in a relationship set R is said to be total if every entity in a E participates in at least one relationship in R. If only some entities in E participate in a relationship in R, the participation of entity set E in a relationship R is said to be partial. The entity set E relationship set R is said to be total. So that means the example. For example, we expect every loan entity to be related to at least one customer through the borrower relationship. Therefore, the participation of a loan in the relationship set borrower is a total. In a contrast, an individual can be a bank customer whether or not she has a loan with the bank. Hence, it is a possible that only some of the customer entities are related to the loan entity set through the borrower relationship, and the participation of customer in the borrower relationship set is therefore partial.
So this is a very important for this ERD. ER diagrams are in the previous year. Next is what ERD issues and weak entity sets. So entity relationship diagrams के क्या क्या issues and weak entity sets क्या होता है देखते हैं यहाँ पे. An entity set may not have a sufficient attribute to form a primary key, such as entity set is termed a weak entity set. मतलब आप कोई भी एंटिटी डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी की नहीं होता है तो उस तरह का एट्रीब्यूट्स वहाँ पे होना चाहिए. Otherwise, it is a term as a weak entity. An entity set has a primary key is termed a strong entity set. अगर उसको आप प्राइमरी की सेट करते हो एंटिटी में एट्रीब्यूट को तो वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बोला जा सकता है. Consider the entity set payment which has the three attributes payment number, payment date, and payment amount. Payment number are typically sequential number starting from 1 generated separately for each loan. Thus, although each payment entity is distinct, payment for different loan may share the same payment number. Thus, this entity set does not have a primary key. It is a weak entity. अगर प्राइमरी की नहीं होता है तो वहाँ पे weak entity हो जाता है. स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी पता होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग मतलब प्राइमरी की सेट रहता है उसमें एंटिटी को और वीक मतलब देयर इज नो प्राइमरी keys will be the not set in the entity here. So primary key is nothing but the unique key. ये एक यूनिक की बोला जाता है. इट इज अ नंबर बेसिकली. प्राइमरी की इज अ नंबर. ये एक नंबर में प्रेजेंट किया जाता है और उसको एक यूनिक रहता है. यूनिक मतलब देयर इज नो duplications will be there. So that's why in the every table, every entities should be the primary key set will be there. तो वीक एंटिटी के प्रॉब्लम भी बहुत सारे हो जाते हैं. So that's why they will be avoid that weak entities. So in this diagram, they will be the design the ER diagram with a weak entity set. देखो अभी यहाँ पे लोन है. लोन नंबर है, अमाउंट है. लोन पेमेंट, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट एंड पेमेंट अमाउंट. अभी देखो यहाँ पे डॉट 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 दिया है. डैशेड लाइन मतलब क्या होता है? इसके लिए होता है जो अभी आपने ऊपर देखा था. देखो लाइन डबल diamond lines with ring, double ellipse, double lines, uh, total participation of entity or in a relationship.
A double rectangle which represent the weak entity set. Double rectangles. देखो यहाँ पे डबल रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, पेमेंट को डबल रेक्टेंगल आ रहा है, तो वो क्या है, वीक एंटिटीज है। ओके, क्या था इसमें? For a weak entity set to be a meaningful, I must be associated with another entity set called identifying or honors entity set. Every weak entity must be associated with an identifying entity. That is, the weak entity set is said to be existence dependent on the identifying entity set. The identify entity set is said to own the weak entity set that it identifies. The relationship associating the weak entity set with the identifying entity set is called identifying relationship. The identifying relationship is a many to one from the weak entity set to the relation to the identifying entity set. So just it will be explained some theoretically. Example, identifying the entity set for a payment is loan, and relationship loan payment that associated payment entities with their corresponding loan entities is the identifying relationship. Weak entity set does not have a primary key. We nevertheless need a means of distinguishing among all those entities in the weak entity set that depend on one particular strong entity. The discriminators of a weak entity set is a set of attribute that allows this distinction to be made. For example, discriminator of the weak entity set payment is the attribute payment number, since for each loan a payment number uniquely identifies one single payment for that loan. The discriminators of a weak entity set is also called partial key of the entity set. The primary key of weak entity set is formed by the primary key. So theoretically, okay, just you should be understanding this diagram very well. तो वही इसको बराबर के वही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वीक एंटिटी कौन सा है, पेमेंट, या डायग्राम विथ वीक एंटिटी सेट। उसके बाद डायमंड शेप रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। As another example of entity set that can be modeled as a weak entity set, consider offering of course of university. The same course may be offered in a different semester, and within a semester, there may be a several sections for the same course. Thus, we can create a weak entity set course offering. Existence dependent on course. Different offering of the same course are identified by semester and a section number, which form discriminators but not a primary key. Course 12 rules. तो कुछ रूल्स है उसके। In the 1985 Computer World article, TED code present 12 rules that a database must obey if is to be considered truly relational. Codes told 12 rules shown in the following list. So
कोड्स के कौन से रूल्स है, क्या है? Rules come out codes theoretical work on the relationship model. तो ये नेक्स्ट और मॉडल आया, रिलेशनशिप मॉडल आया। पहला फाइल सिस्टम मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, देन रिलेशनल मॉडल, relational database model. And relational model and actually represent more of an ideal goal than definition of a relational database. First rule, information rule. All information in a relational database is represented explicitly at the logical level and exactly one way by values in a table. Second, guaranteed access rule. Each and every datum in a relational database is guaranteed to be logically accessible by resorting to a combination of a table name, primary key values, and column name. Systematic treatment of null values. Null values are corresponded in a fully relational DBMS for representing missing information. The null matlab missing information and inapplicable information in a systematic way, independent of the data types. तो सिस्टमैटिकली उसको मैनेज करना चाहिए नल वैल्यूज को, इंफॉर्मेशन रूल होना चाहिए, गारंटेड एक्सेस रूल होना चाहिए, systematic of null values will be treated for their dynamic online catalog based on the relational model. The database description is represented at the logical level of in the same way as ordinary data, so that authorized users can apply the same relationship dynamic online catalog based on the relationship mode. The database description is represented at the logical level in the same way as ordinary data, so that authorized users can apply the same relational language to its interrogations as the applied to the regular data. Comprehensive data sub-language rule. A relational system may support several languages and various modes of terminal use. For example, the fill in the blank mode. However, there must be set at least one language whose statements are expressible for some well-defined syntax. So, language जो है वो सब language rule will be there. Syntax as a character string, and that is a comprehensive in a supporting of the following items. Data definitions, view definition, data manipulation,
interactive, and by program, integrity constraint, authorization, transaction boundaries, व्यू अपडेटिंग रूल होना चाहिए, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट होना चाहिए, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होना चाहिए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, नॉन सब रूल्स। तो ये इतने सारे रूल्स से इसके अंदर भी अलग अलग the availability of application program that support the particular database system and other issues rather than conformance to the course rules. Nonetheless, they are an important part of the history of the relational mode. Rule one is basically the informal definition of relational database presented at the beginning of this section. Rule 2 state the importance of primary key for locating the data in the database. Table name locate the correct table, column name find the correct column and primary key value. Find the row containing an individual data item of interest. Rule 3 requires support for mission data through the null values. Require that a relational database be a self-describing. In other words, the database must contain certain system tables whose column describe the structure of the database itself. Rule 5 mandates using the relational database language such as SQL. SQL is not basically required. The language must be able to support all the central function of DBMS, creating, retrieving, and entering the data implementation database security and so on. Rule 7 strict set oriented nature of relational database. It requires that row be treated as a set, insert, delete, update operations. Rule 8 and 9 insulate the users or application program from low-level implementation of the database. They specify that the specific access or storage technique used by the DBMS and even change to the structure of the table in the database should not affect the user's ability to work with the data. Rule 10 says that the database language should support integrity constraint that restrict the data that can be entered into the database and database modification that can be made. This is another rule that is not supported in most commercial DBMS products. Rule 11 that the database language must be able to manipulate the distributed data located on the other computer system. Finally, rule 12 prevent other parts into the database that might be subvert its relational structure and integrity. So this is all about a ER diagram and course rules will be there. Differently, what can we do in the rules will be understand and it clear with the help of this. I will take one screenshot to it.
So next is one of the language introduction here, UML, Unified Modeling Language. Entity relationship diagram help model the data representation component of a software system. The ER diagram basically it's a very beneficial for the software system. Whenever you have to develop the software, जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप शो करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन में। ईआर मॉडल शो करना पड़ता है, उसी के अंदर आपको टेबल, उसकी रिलेशनशिप, उसके एट्रीब्यूट्स ये सब शो करना पड़ता है। In the TY, you have to done this one of the when you have to done the project software. That time we have to draw the ER diagrams. Other components also include model of users' interaction with the system, specification of functional model of the system and their interaction, etc. The UML Unified Modeling Language is proposed standard for creating a specification of various components of software system. Some of the parts of UML are class diagram. तो UML में class diagram आता है, then use case diagram, activity diagram, implementation diagram, तो ये सारे diagrams आते हैं. तो class diagram is similar to an ER diagram. Later in this section, we illustrate a few features of the class diagram and how they relate to ER diagram. So this is for class diagram. Use case diagram. Use case diagram show the interaction between user and system. तो use case में क्या होता है? Interaction between users and system in a particular steps of task. अलग-अलग टास्क उसके अंदर सेट के शो किए जाते हैं. टास्क दैट यूजर्स परफॉर्म, जैसे कि बैंकिंग में विथड्रॉइंग मनी और रजिस्टरिंग फॉर अ कोर्स. तो ये एग्जांपल बताया कि किस तरह से आप ये केस में ये टास्क मतलब टास्क कैसे आते हैं. एक्टिविटी डायग्राम डिपिक्ट द फ्लो ऑफ टास्क. टास्क का फ्लो रहता है बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ सिस्टम. इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम how the system component and their interconnections both at the software component level and hardware component level. The implementation diagram में आता है. So we do not attempt to provide the detailed coverage of the different part of the UML here. See the bibliography notes for reference on UML. Instead, we'll illustrate some feature of UML through the example. तो एग्जाम्पल बताइए यहाँ पे डायरेक्ट होने UML का. Figure 6 shows the several ER diagram. यहाँ पे आपको अलग-अलग ER diagram लिखा है.
6 diagram. Several ER diagram construct their equivalent UML class diagram construct. We describe this construct below. UML shows entity set as a boxes and unlike ER show the attribute within the boxes. तो ये डायग्राम इसलिए हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये डायग्राम शो किया है। तब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ये एंटिटी सेट्स एंड एट्रीब्यूट्स कस्टमर के अलग-अलग कस्टमर ये एक एंटिटीज है और ये आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी दीज़ आर द एट्रीब्यूट। तो ये आपको ईआर मॉडल में हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। व्हाट अबाउट द ईमेल? कोऑर्डिनेट कंस्ट्रेंट आर द स्पेसिफाइड इन ईमेल इन द सेम वे इन ईआर डायग्राम। तो ईमेल में पहले कस्टमर मतलब टेबल का नाम है या एंटिटी का नाम होता है, उसके बाद फिर उसके अलग-अलग फील्ड के नाम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी। तो पहला डायग्राम जो है वो ईआर मॉडल का है और दूसरा जो डायग्राम है वो यूएमएल डायग्राम है। यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के डायग्राम से। तो उसमें किस तरह से आप एंटिटी शो करते हैं यूएमएल में और एट्रीब्यूट्स ये यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग किया है। रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं डायग्रामेटिकली इन द ईआर E1 role 1 related to the role 2 E2। तो उसी तरह यूएमएल में क्या करते हैं E1 रोल 1 आर आता है खाली यहाँ पे बॉक्स वगैरह नहीं किया है। रोल 2 E2। Again the below diagram will be show here E1 roll 1 relation A1 A2 roll 2 A2। उसी तरह डायग्राम in UML E1 roll 1 roll 2 E2 R1 R is equal to R into A1 A2। तो ये किस तरह से ड्रॉ किया है ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटी कंस्ट्रेंट्स E1 0 डॉट 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 स्टार रिलेशन 0 स्टार मतलब 0 और मोर 0 एंड 1 रिलेशनशिप E2। उसी तरह यूएमएल में 0 डैश डैश 1 आर 0 डॉट डॉट स्टार E2। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन किस तरह से ईआर डायग्राम में होता है और क्लास डायग्राम इन यूएमएल। पर्सन इज ओ मे बी कस्टमर मे बी एम्प्लॉय। ओवरलैपिंग जनरलाइजेशन पर्सन may be a customer or may be employee. Disjoint generalization. Person disjoint. Customer employee. Person customer and employee. So it's a very well understanding with the help of this various diagrammatic representation of class diagram in UML। तो उसको क्लास डायग्राम बोलते हैं। किस तरह से अलग-अलग नोटेशन से ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज फॉर योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द database chapter will be finished today. Okay. Next will be discuss in detail relational database model. Everyone see that you need to relationship database model.
तो रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल में हमने ईआर डायग्राम्स वगैरह लिखे सीखा भी। यहाँ पे आपको लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा, व्हाट इज द लॉजिकल व्यू? Logical view is connected with the functionality that the system provided to end users. UML diagram used to represent the logical view include class diagram and state diagram. तो क्लास डायग्राम से और स्टेट डायग्राम से हम इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिकल व्यू को इन यूएमएल। Diagrams used to represent physical view include the development diagram. See here, the logical view मतलब क्या रहता है actually is connected with the functionality that the system provides to the end user. End user के लिए system से provide किए गए अलग-अलग functionality रहती है. That is a logical. It will be implemented with some application. Okay. The UML diagrams used to represent logical view include class diagram and state diagram. तो क्लास और स्टेट डायग्राम यहाँ पे UML diagram used to represent the physical view include the development diagram. It's a very important this unit. नाइन बजे तक लेते हो फिर स्टॉप करते ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर को लेना है। वेट फिर ये और एक स्क्रीनशॉट ले लो। This chapter will start in the next lecture, but just wait. I will take a screenshot for this. सर हाँ बोलो ना। सर ये जो आपने पीडीएफ बनाया है सर वो ग्रुप में नहीं सेंड करोगे? हाँ कर दूंगा ना मैं। क्योंकि क्या है ना टेक्स्ट बुक में देखा हो ना तो टेक्स्ट बुक का जो है ना वो एकदम ही डिफरेंट है और जो आपका पीडीएफ है ना ऐसा लगता है समराइज वर्जन है। एज पर सिलेबस। हाँ तो आपका पीडीएफ ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, पहला यूनिट का सेंड कर देता हूँ। आप पहला यूनिट का सेंड कर दो क्योंकि अभी दूसरा तो आप अगले अगले लेक्चर में स्टार्ट करोगे ना। हाँ यस यस राइट। थैंक यू। चलेगा। टेलीग्राम पे ओके। हाँ, हाँ। टेलीग्राम पे। ओ टेलीग्राम की चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है। श्योर। ओके। लेकिन वो पढ़ो फिर आपके लिए वो बेनिफिशियल है ना।
हाँ सर। क्योंकि उसके अंदर नोट्स पर दिया है, तो अगर वो नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग बेटर, तो यू कैन बी प्रेफर द अदर बुक आल्सो। तो एक्चुअली ये अवेलेबल है, आपको भी पता चल जाएगा, मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है? चलेगा, फिर अभी स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर में आपको मैं ये पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। डन? ओके, विल डू। यस सर। हाँ, यस, बोलो ना। हाँ। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, कौन बोल रहा है? हाँ सर, वो बाइक का यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए। ओके। सर, इज देयर एनी असाइनमेंट फॉर अस? सर, इज देयर एनी असाइनमेंट फॉर अस? ठीक है, असाइनमेंट के बारे में चेक करके मैं बोलता हूँ फिर। असाइनमेंट रहेंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा लिखने के लिए। आपका प्रैक्टिकल भी ना इसका एक्चुअली। यस, प्रैक्टिकल होगा, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सैटरडे संडे रहेगा, लेकिन सेंटर वाइज रहेगा वो भी। हाँ, मतलब जो किसी भी सेंटर आपको अलोकेट किया गया हो ना, तो उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी डीटीएसएस कॉलेज के जो रहेगी माराड़ वाले, उनका लिए मैं अभी टाइम टेबल और मैडम से लिस्ट लेके ईमेल सेंड करता हूँ, ताकि उसमें आप ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक आपका वो प्रिपरेशन मैं करके आपको ईमेल सेंड करता हूँ। जो डीटीएसएस कॉलेज सेंटर के हैं, उनका ही प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे। ओके, और कुछ पूछना है? नथिंग? हाँ, और तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है सर। बहुत मुझे पीसीपी सेट का पीडीएफ है ना, अब तक आया नहीं है। हाँ, नहीं, मैडम कर रहे वर्कआउट शायद। वही। तो जैसे हो लेकिन जाएगा फिर हाँ। ग्रुप में आएगा, और फिर उसके हिसाब से आपको मेल भी आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। एनीथिंग? नथिंग? ओके, फिर शाला स्टॉप। तो नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे लगा कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। उसके बाद आए सब, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी आप ज्वाइन करो। ठीक है, सो इन द यूनिट 2 विल बी स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। चलो, बाय, टेक केयर, थैंक यू।